Good morning students, my name is SUVAS VORA, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, we are already starting the chapter number 1. The name is the Institutions, Principles and Concept. So, start with the new topic. We will learn about the last topic. So, in the last topic we can see in the last lecture we can see the first of all introductions of the constitutions यानी कि बंधारण. So the working definitions of the constitution is set of the fundamental legal political rules that are binding on the everyone in the state, including the ordinary law making in institutions. यानी कि बंधारण में ऐसे लॉज डिफाइन किए हैं कि एक टाइप की बुक्स है जहाँ पे सबके लिए एक हक के बारे में लिखा हुआ है. So the working definition is are based on the widespread of public legitimacy, then are the hard to change, then ordinary laws as a minimum meet the internationally recognized criteria for the domestic system. उसके अंदर इंटरनेशनल्स दैन डोमेस्टिक्स और उसके सभी के लिए नियम्स है. यानी कि इस सब्जेक्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बंधारण पढ़ेंगे जहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से और अलग अलग गुना के हिसाब से उसमें सबके हक के बारे में लिखा हुआ है, किस तरह से किन लोगों को कौन सा हक मिल सकता है. So the functions of the constitutions is the constitutions can declare and define the boundaries of the political communities. अगर जैसे ही हमको पता है कि हम पेटा चुटनी करते हैं यानी कि पॉलिटिकली एक एरियाज़ होता है, जैसे कि गुजरात स्टेट है दैन महाराष्ट्र स्टेट है, तो उसमें अलग अलग एक बाउंड्रीज डिक्लेयर की हुई है. Then the constitutions can declare and define the nature and authority of the political community. उनके लिए एक particular nature और authority दी हुई है. Then the constitutions can express the identify and value of the national community. अब सभी communities के लिए अलग अलग नेशनल वाइज आइडेंटिटी और उसके रूल्स एक्सप्लेन किए हैं उसमें. Then the constitutions can be declared and they define the right and the duties of the citizens. उसके अंदर हर सिटीज़न के लिए पर्टिकुलर डिक्लेयर किया हुआ है कि इन लोगों को यही टाइप का वर्क है और यही उन लोगों का हक है, अधिकार है. Then constitutions can establish and regulate the political institute of the community. यानी कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं सबके खुद के कुछ हक है. यानी कि जैसे हमको पता है अगर कहाँ पे कोई गुनाह हो रहा है, हमको पता है कि कौन गुनहगार है, पर वो हम नहीं बता सकते, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है और उसमें जज जो है वही. यानी कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें पर्टिकुलर वर्क भी डिफाइन किया हुआ है कि भाई सज़ा देने का काम जज ही कर सकते हैं, ना कोई वकील, ना कोई पुलिस और एनीथिंग. Then after the constitutions can be divided or share power between the different layer of the government committees. जैसे ही हमको जानते हैं कि गवर्नमेंट में अलग अलग कमिटीज़ है, लोअर कोर्ट्स है, हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस टाइप की अलग अलग जो है वो उसमें डिवाइड किया हुआ है. So the constitutions can declare the official religions identify of the state and the demarcate the relations between the स्क्रेड एंड सेक्युलर अथॉरिटीज़. अलग अलग लॉज, अलग अलग कम्युनिटीज़ और अलग अलग चाहत के लिए अलग अलग लॉज है. जैसे कि मुस्लिम्स लॉ है, क्रिश्चियंस लॉ है, हिंदू लॉज है, तो वो अलग अलग लॉज को भी इसमें मेंशंस किया हुआ है. तो द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन दी कमिटेड टू द पर्टिकुलर सोशल्स, इकोनॉमिक एंड द डेवलपमेंट गोल्स. Now what is the constitutions in anywhere? So almost everything we do is the governed by some set of the rules. हम जो भी करते हैं
हमारी डेली लाइफ में जो भी करते हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स के एक पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स है। जैसे कि घर से जब हम व्हीकल लेके निकलते हैं तो हेलमेट पहनना, लाइसेंस रखना, वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स है। सो देयर आर द रूल्स फॉर द गेम्स। अगर मुझे उसको समझने के लिए अगर मैं किसी गेम के साथ कंपेयर करूँ तो बेस्ट एग्जांपल है सॉकर्स यानी कि फुटबॉल्स। फॉर द सोशल क्लब्स एंड अदर adults in the workplace. So there are also rules imposed by the principles and the traditions that play an important role in telling us what we do, should or should not do. यानी कि सभी ट्रेडिशंस और प्रिंसिपल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स है। उसमें लिखा होता है क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है। तो अगर मैं सॉकर्स यानी कि फुटबॉल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किसी को पुल अप नहीं कर सकते, आप किसी के सामने शाउट नहीं कर सकते। दीस आर द अगेंस्ट द रूल्स। सो द इन द गेम ऑफ द सॉकर्स द रेफरी इज द गवर्नमेंट। इफ आई कंपेयर विद द रेफरी इज द गवर्नमेंट एंड दे हैव द रूल्स। सो फुल्ली अथॉरिटी टू इंश्योर दैट द रूल्स और laws of the game on the players. When the player do something against the rules, the referee take actions like send off the player. So अगर उसको वार्निंग दी जाती है तो येलो कार्ड होता है और अगर उसको टर्मिनेट करना है तो रेड कार्ड होता है। So these are the one of the examples which we can say that the constitution is in everywhere. कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक टाइप का ऐसे रूल्स है जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि हम गेम्स है या कोई भी गेम्स खेले तो उसके खुद के रूल्स होते हैं। सो दीज आर रूल्स कैन बी डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द रूल्स दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेटर आर ऑल्सो नोन एज द लोकसभा, राज्यसभा इन इंडिया। फॉर देयर ओन कंट्रीज आर कॉल्ड द लॉज। So we need the laws in the society so our social can regulate and work the properly, and they are designed to protect us or our properties and ensure that the everyone in the society behaves what the community expects them to. So let us what the expect as the consequence result of something else of our actions, and the laws has been glue that has kept the social together. Without the laws there would be complete अनाचार्य। यानी कि अगर कोई रूल्स नहीं है, कोई लॉज नहीं है तो अत्याचार यानी कि एक दूसरे पे हम जो बिहेवियर्स है, जो कहते हैं कि पनिश्ड है, वो बहुत बढ़ जाएगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए कोर्ट्स है और the police cop. So now we can talk about the definition. So according to these Western concepts, the Constitution is the document that contains the basic and fundamental laws of the nations. These are the Constitution's book. Many countries have written the constitutions to the phenomenon of the living constitutions. So another we can say that the definitions of the constitution is the basic norms or laws of the state, then system of the integrations and the organizations of norms and laws and organizations of government. So these are the basic definitions of the constitutions. So typical concept of the constitutions is divisions. Divisions means जैसे हमारे एक बुक की बात करते हैं तो बुक में टाइटल्स होते हैं, टाइटल्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। सो आर्टिकल के अंदर उसके पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। सो द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस आर divided and the subdivided into the parts that may be various parts known as the titles, chapter, article, sections, paragraph और clause. क्लोजेस यानी कि पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर और पैराग्राफ के अंदर पर्टिकुलर जो लाइंस होती है जो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, दिस आर कॉल्ड द क्लॉज। नाउ दे आर अरेंज फ्रॉम द पर्टिकुलर फॉर्मेट
So the constitutions vary in the arrangement of their provisions, although it is now useful for the principal and the right provisions to be placed in the separate sections near the beginning of the text. So constitutions is connected between two purpose, which one is connected with the government and the peoples. So government is divided into three main activities: the legislative, judicial and executives. So legislative is make the laws, which one is given the parliaments, Rajya Sabha, Lok Sabhas. Then judicial, the interpreted the laws, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स. देन इन्फोर्सेस लॉ, जो एग्जीक्यूट करते हैं द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ द मिनिस्ट्री एंड अदर्स पर्सन्स. सो दीज आर द बेसिक structures. So the layout of the typical constitutions might the resume of following things: preamble, then preliminaries, fundamental rights, social and economic rights, then preliminary or legislative, aid of the state, government, judiciary, sub-national governments, then institutions of the fourth branches and security sectors. So in the last lecture we can see this. Now the today's topic is the meaning of the constitutionalism, similarity and difference between the constitutions and constitutionalism. So constitutionalism की बात करें तो उसको कहते हैं बंधारणीयता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस तो बन गया, कॉन्स्टिट्यूशंस तो है, लॉज तो है, पर वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह से गढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. सो द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स nowadays the constitutionalism has become as a important and the issues as that good governance, यानी कि लोगों को बेनिफिट के लिए जो रूल्स और लॉज बनते हैं उस बंधारण को कहते हैं गुड गवर्नेंस. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस इन विच द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय द लॉज, checks and balances in order to reconcile the authority with the individuals and collective freedom. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो गवर्नमेंट के लॉज को रिप्रेजेंट करता है और उसकी लिमिट है लॉज थ्रू, चेक्स थ्रू या बैलेंसिंग के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज we can say that the constitutionalism may be defined as the belief in continuous the beliefs had and the beliefs in the constitutional governments, यानी कि the set of the beliefs held and taught by the political party that governs the lawfulness of the government's actions, and it implements something far more important than the idea and legislative that require the official to be according with the prefix legal rules. यानी कि पहले से उसके लिए जो लॉज और रूल्स रखे हुए हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल the idea of the constitutionalism is the strictly linked with the progress and the separate of the demonstratics, यानी कि प्रोग्रेस के लिए और उसको डेमोस्ट्रेटिक सेपरेट करने के लिए है. सो इन वी कैन see that the concept of the constitutionalism can be defined the set of the beliefs, so that we can say that the later definitions so that having the constitutional
constitutions alone does not secure or bring the constitutionalism, except for few states which have unwritten constitutions. So the concept of the constitutionalism has evolved during the last few countries thanks to political challenges and the process of the democratic idea. यानी कि ये जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है यानी कि बंधारणीयता है, वो जब चैलेंजेस होती है, जैसे कि यहाँ पे जैसे से हमको पता था कि 49% हम रिजर्व्ड कैटेगरीज लाए, तो उसको एक टाइप को उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाने के लिए जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अकॉर्डिंग टू द Barnett, the constitutionalism embraces the limitations of the powers. Constitutionalism का क्या एक particular limitations है. So the limitations government, separations of the powers and the responsible and the accountable government, identify the popular jurisdictions, rules of law, limited governments, the separations of the powers. So we can given the some characteristic of the constitutionalism. So they have according to the जैसे ही मैंने बताया था, they have the limitation of the powers, then separation of the powers, responsibility and the accountable governments. So the basic elements of the constitutionalism, the first one is the popular jurisdiction. So what is the popular jurisdictions means? The popular jurisdictions that the fact that the public is the source of the foundations of the government authorities and the legitimacy of the government of the power is divided from the concern of the public. So in easy way we can say that the government acquires its the mandate from the people. यानी कि populations जो popular jurisdictions यानी कि जो पब्लिक्स है, सिटीजन्स है, उसको इजी अंडरस्टैंड हो सके उस हिसाब के जो रूल्स होते हैं वो इसमें कंसिडर किए गए हैं. तो द सोर्स ऑफ ऑल द जुरिडिक्शंस लाइज एसेंशियली इन द नेशन. सो द नो कोऑपरेटिव बॉडीज, नो इंडिविजुअल्स बॉडीज में एक्सेसिव एनी अथॉरिटी दैट डज नॉट एक्सेसली एमेंस फ्रॉम इट. सो इवन थ्रू we can say that there is the certain some having entities which is govern ultimate the jurisdictions residence in the nations and the power of such a emanate from the public. So these are the considered in the popular jurisdictions. The next one is the separations of power. So under the constitutionalism, the power is not the concentrate in any one organ of the state. यानी कि जो पावर्स है वो पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए ऑर्गन्स नहीं है. सो इट इज़ डिफ़िकल्टी अमोंग द 3 organs of the state, the legislative, the executive and the judiciary. So they have divided in the 3 main parts: legislative, executives and judicial, जैसे ही मैंने आगे बताया. So it's the power is monopolized by any one of the organizing that state. There could be absence of the powers. So in the state of the powers is divided in the 3 main parts. जैसे ही हमने आगे देखा कि एक जो है वो रूल्स बनाता है, दूसरा जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड थर्ड वन इज़ द जुडिशियल यानी कि लॉज. देन आफ्टर द रिस्पॉन्सिबल्स एंड द अकाउंटेबल गवर्नमेंट. सो इन द डेमोक्रेटिक नेशंस और कंट्रीज द पीपल प्रिसाइड्स देयर गवर्नमेंट्स एज देयर ओन सर्वेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज there is to serve their interest or act as the steward of their interest. यानी कि कुछ कंट्रीज़ में डोमेस्टिक कंट्रीज़ होती है जहाँ पे बोलने की और सभी
अपनी व्यूज़ रखने की आज़ादी होती है, और वो लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट वन टाइप ऑफ द सर्वेंट है, सो दे हैव सर्व देयर इंटरेस्ट एंड द एक्ट दैट इंटरेस्ट, यानी कि वो अपने हिसाब से रूल्स को कन्वर्ट कर सकती है. सो द गवर्नमेंट एज्यूम द ऑफिस इन द नेम एंड द बिहाफ ऑफ द पीपल फ्रॉम द बेनिफिट्स of the public. So in the article 15 of the French declarations of the human rights recognize the right of the society to ask the public official to account for his and her administrations. जैसे अपने मूवीज़ थी आर्टिकल 15, यहाँ पे उसी चीज़ की बात करते हैं कि जहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो पब्लिक के लिए रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, पब्लिक को बेनिफिट के लिए. सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है जो पब्लिक के लिए वर्क करती है. देन आफ्टर द रूल्स ऑफ लॉ. सो द रूल्स ऑफ लॉ डिनोट द गवर्नमेंट ऑफ द लॉ आर और नॉट ऑफ मैन. सो इंडिविजुअल वर्किंग विद इन द स्टेट मशीनरीज आर expected to execute their official duties and responsibilities in accordance with the laws. So in order to rules of the law represent the supremacy of the laws. So according to the disease, the rules of the law is the no one is punishable except for the distinct branch of the law estimate in ordinary legal manner before the ordinary courts of the lands. No person is above the law. Rules of the law उसमें एक ही चीज़ है, या मशीनरीज हो या मैन्स हो जो भी हो, कि जो लॉज है उसको ऊपर कोई नहीं है, यानी कि लॉ में जो लिखा हुआ है वही फाइनल होता है. Then after the independent of the judiciary. So in the liberal democracy, the individual is at the center and the judicial independence is the hallmark of the liberal democracy. So the rights of the individuals are ensured and represented. यानी कि कुछ ऐसे लॉज है जो जुडिशरी के थोड़े अलग होते हैं. So the which one is the independent of the judicials, and the independent judicial is the concentrates of the free societies and the rules of law. जहाँ पे सोसाइटी के हिसाब से उन लोगों को लॉस होते हैं. जैसे ही मैंने अभी बताया कि सबके लिए लॉस सेम है, लॉस के ऊपर कोई नहीं है, बट जैसे अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग लॉज होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कंसीडर करके कॉन्स्टिट्यूशंस में रखा हुआ है. सो दीज आर दी वन टाइप ऑफ लॉज बट दे हैव द इंडिपेंडेंट जुडिशरी. देन आफ्टर द रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स. सो रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स is the self-determination refers to the right of the people living in the territory to determine the political and the legal state of the territory. For example, we can say that the setting up of the state of their own by choosing to become a part of the another state. So however, this right is granted to the colonies and department of the state. This is clearly stated under the Article 1, Sections 2 and the 55 of the UN characters. So यहाँ पे जो खुद के जो रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल रूल्स है, यानी कि जो इंडिविजुअल राइट्स है उसकी बात करते हैं. सो द खुद के जो राइट्स होते हैं, जैसे कि हर इंसान के खुद के जो राइट्स होते हैं, यहाँ पे उन सभी को कंसीडर करते हैं. देन आफ्टर द सिविलियन कोर्ट ऑफ द मिलिट्री. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट द पार्टी इज द ऑटोनॉमस. सो इट इज द पार्टी विच गवर्न द गन
or the military to some external themes or statement seems to hold the true in the contemporary world as well. So in the democratic countries, it is the democratic elected official who are allowed to govern or control the military, although the technical affairs of the left to the military personnel. यानी कि जैसे हमारे जो लॉज है उसमें एक ऐसा भी लॉज है जो सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्रीज, यानी कि जो मिलिट्री के लॉज है उसके लिए पर्टिकुलर कोर्ट्स होती है और उसमें मिलिट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हुए एक मिलिट्रियन ही लॉर्ड्स या जज होते हैं. देन द पुलिस गवर्नड बाय द लॉज एंड जुडिशियल कंट्रोल्स. So the prime responsibility of the ensuring the peace and other is borne by the police, and it should be the duty of the bringing the wrongdoers to the juries. However, when the police discharge the such duties, the constitutionalism required them to honor and respect the rights, dignity, and the freedoms of the individuals, including the wrongdoers and persons suspected of the offense. हमको जानते हैं कि पुलिस का और जुडिशरी कंट्रोल का क्या मेन रोल्स है, हमने वैसे भी मूवीज़ में और सभी जगह पे देखा ही हुआ है. सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. अब हमने दो पार्ट देखे, एक कॉन्स्टिट्यूशंस देखा और दूसरा देखा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो व्हाट इज़ द सिमिलरिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? सो द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म are overlapping concept, although the first refer to the right body of laws and legislative. अब legislations की बात करते हैं. legislations यानी कि वर्तर, यानी कि जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो. तो the constitutionalism refers to written a body of laws and legislations. So the constitution is the one type of the body of law and legislations, and the second complex principles and the system of the governance. So the first one, the constitutionalism, is the complex principles and the system of governance. So you can see here constitution one type of written body है जो laws को represent करती है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ अ प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट के सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है. सो द सिमिलर बिटवीन द टू इंक्लूड्स, सो बोथ आर रिफर टू लिमिट्स एंड फीचर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्रीज. सो द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वुड नॉट एक्सिस्ट विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशंस के बिना अधूरा है, एंड द constitutional way of the governing the countries of require the limits and boundaries to the central and authorities. और constitutions एक boundaries representations करती है. So here दोनों चीज़ एक जैसे ही है. constitutionalism जो constitution को represent करती है, और constitutional वो एक boundaries represent करती है. The both influence and the actions of both the government and the populations. So beside the providing the framework for the political and the institutional structures, the constitutionalism set out the main rules that all the citizens should respect. Constitutionalism क्या होता है कि जो भी citizens है उसकी एक respect होती है. Furthermore, the ruling the constitutionalism manner, meaning that the government applies the regulations outline the constitutions to the limit and manage the citizens. और constitutions क्या होता है कि जो citizens है उसको एक particular form में रखने की बात है. So the act always represent respecting the individual and the collective rights. The both the protect and the preserve the individual and collective rights. So preventing the central government from the abusing of the powers and inferring the citizens basic of the freedom. दोनों को अलग अलग की फ्रीडम दी हुई है.
So these are the basic similarities. Now the difference between the constitutions and constitutionalism. The main difference between the constitutions and the constitutionalism lies in the fact that the constitution is a written document can create by the government, and while the constitutionalism is a principle and the system of governance that respect the rules of law and limit the power of the government. And the others between the concept is constitutionalism is the based on the principle outlines in the constitutions or in order to legal documents, but in also the principle of its own. And the idea of the constitutionalism is the opposed to the concept of authority and despotic rules, and is based on the belief that the power of the government should be limited in order to prevent the absence and excessives. So these are the difference of the constitutions. Then the constitutions is often the written document, while the principle of the constitutionalism are generally unwritten. So both the constitutions and the constitutionalism evolve with the programmability of the domestic ideals, although they do not always process for domestic idea at the same speed. So there can be constitutional form of the government that respect the rights of the citizens and promote the democratic values, even although the national constitution is outdated. So at the same time we can say that the insufficient domestic government may not be able to rule in the constitutional way despite the existence of the constitution. So these are the basic difference between the constitutions and constitutionalism. So if any query regarding this topic, you can call me. If any questions regarding this topic, you can mail me. My mail ID and contact number is seen on your screen. Thank you.